Swagatam, Swagatam. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Bolo. You're translating? You're translating? Okay. Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha. Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Sri Radha. Jaya Sitaram, Lakshmana Hanuman, Sitaram, Lakshmana Hanuman. Jai Goranitai, 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 Jaya Goranitai. Jaya Panchatattva, 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 Jaya Panchatattva. Astotra Satatsi Sinadi Divine Grace is confounded. Srila Abhacha Navina Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaja Ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Astotra Satatsi Sinadi Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavina Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Koti Ki Jai. Prem se kahao Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadara Si Basadi Si Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Si Radha Krishna Gopal Gopinath Simakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Jagannathpuri Dham Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the sum of devotees. All glories to the sum of devotees. All glories to the sum of devotees. All glories to Sisi Gauranga. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Omagyanna Timirandasya, Gyanajana Salakaya, Saksodamanitam Jena Tasmai, Sri Guru Brahma Maha, Chaitanya Manovistam, Tafitam, Yenabhutale, Swayam Rupam Kadamayam, Dadati Sva Padantikam, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Sivasari Gaura Bhaktivinoda, Vande Sri Krishna Chaitanya, Nityananda, Sahodito, Gudadaya Puspavantu, Chita Chanda Tamand. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale, Semate Bhakti Vedanta. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyabadi Pashatya Disatari Vansha Kalpatari Vacha Kripasan Vacha Patitanam Pavanandi Vaishnavi Bhyo Namo. So, this morning, in place of the regular Bhagavatam class, we're going to read from
Srila Prabhupada Lilamrita, Volume 4, a biography of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada by Saswarup Das Goswami. हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम लोग श्रीमद् भागवतम की जो नित्य कक्षा होती है उसकी बजाय हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत का पाठ करेंगे, जो कि श्रील सत्स्वरूप दास गोसाई महाराज द्वारा रचित है। So, Lord Krishna mentions in the Padma Purana, in his discussions with Arjuna, that service to the devotee, service to his devotee is more important than direct service to him. In a similar way, in the Bhagavatam, Prabhupada has emphasized in some of his purpose how the glorification of the Supreme Personality of Godhead as enshrined in the Bhagavatam, along with his devotees. This is what helps to cleanse the dirty things on the mirror of the heart. So we can't do one and neglect the other. They are supposed to be mutually inclusive. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्तों की सेवा उनकी अपनी सेवा से अधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली है। ठीक इसी तरह श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में इस बात को समझाते हैं कि भगवान का गुणगान और उनके भक्तों का गुणगान अलग नहीं किया जा सकता, दोनों की ही आवश्यकता है। तो जैसे दोनों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि एक से काम चल जाएगा। तो भगवान का भी गुणगान करना है और उनके भक्तों का भी गुणगान करना है। Because just like the glorifications of the Lord catapult us to the spiritual world, facilitate in catapulting us to the spiritual world, the glorifications of the pure devotee is even more expedient in transporting the jiva beyond the material world to the spiritual realm. तो दोनों से ही हृदय का मार्जन होता है और भगवान के गुणगान से, भगवान की कथा से एक जीव इस भौतिक संसार से निकलकर भगवतधाम जाता है। और उसी तरह जब भगवान के महान भक्तों का गुणगान करते हैं तो वास्तव में अधिक प्रभावशाली है जीव को यहाँ से उठाकर बाहर निकालने के लिए। Therefore, in our philosophy and in our practice, that phenomenon of Yasa Prasada, Bhagavad Prasada, Yasa Prasadam, Nangati Kutopi prevails. By pleasing the spiritual master, automatically the Supreme Lord is pleased. By glorifying the spiritual master, Lord Krishna also becomes satisfied. I mean, it's like, say, the President of India, you glorify her son or her daughter. You debuted an album glorifying her son or her daughter. President of India is a woman. You know that? You know that the President of India is a woman? Yeah. You respect women? You respect women? आप आदर करते हो स्त्रियों का? I'm just joking. So there's something really amazing, you know. In India, and this is just very, very, very practical. It's a patriarchal. It's okay. It's a patriarchal culture where the man is dominant, this dominant factor, whether in the communities, in the family. But the whole of India is presided over by a woman. President is a woman. Think about it. So respect women, okay? तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला हैं, तो उसके बारे में सोचिए। तो इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।
And not only that, even the whole of this planet is looked after. The president of the whole of this planet is a woman. What's her name? Durga. Bhumi. This planet. Durga is the whole universe. Okay. The planet is ruled by a woman. The whole universe is ruled by a woman. तो हमारी पूरी पृथ्वी लोक है, उसका शासन एक स्त्री करती हैं, भूमि देवी। जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसका शासन एक स्त्री करती हैं, दुर्गा देवी। सोचिए इसके बारे में। We should think about it. We should, rewind our brain. Rewind our brain fibers to perhaps honor women more, because whether we like it or not, they're ruling us. They're ruling the whole universe. They're ruling the planet. They're ruling this country. तो हम चाहें या ना चाहें, हमारा राष्ट्र हो, हमारी पृथ्वी हो, हमारा पूरा ब्रह्मांड हो, उसका शासन एक स्त्री ही कर रही है। Okay, talk about women. Even the most sensitive positions in the whole universe, they are they are administrators, they are women. For instance, education. Education is the most important department, because without education, we will not be where we are. We can't read Prabhupada's books. We can't discuss about Krishna. But in the whole universe, the person in charge of education is a woman. Saraswati. और अगर आप शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षा नहीं होगी तो आप प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे, शिक्षा नहीं होगी भक्ति के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो जो शिक्षा की अधिष्ठाता देवी हैं, वो भी सरस्वती हैं, वो भी एक स्त्री हैं। And we should let the women of India know that this is how the universe is being run. It's run by women. तो इसलिए भारत की महिलाओं को बताना चाहिए कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो महिलाओं के द्वारा ही चलाया जा रहा है। And even in the spiritual world, it's ruled by a woman, Radharani. Go look at So everywhere, everywhere is women who rule. और आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी शासन चलता है एक महिला का। तो कहीं पर भी चले जाएं, महिलाओं का ही शासन होगा। All right, all glories to the mothers. All glories to तो इसलिए to Mataji's. तो माता जी की जय हो। Okay, so the title of this chapter is Unlimited Opportunity, Limited Time. तो इस अध्याय का शीर्षक है असीम अवसर सीमित समय। Page 6, second paragraph. Srila Prabhupada's visit to Montreal. Montreal is in Canada. Montreal is the French-speaking region of Canada. तो मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, तो वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं लोग। Canada, we have the English-speaking part, the Toronto area, and then the French-speaking part, which is the Montreal area, Quebec. तो जो टोरंटो है वहाँ पर लोग अंग्रेजी बोलते हैं और मॉन्ट्रियल जो स्थान है वहाँ पर लोग फ्रेंच बोलते हैं। So Srila Prabhupada's visit to Montreal took place early in the summer of 1968, 6 months after his return to America. In India, from July to December of 1967, he had recovered his health, and on December 14, he had returned to San Francisco. श्रील प्रभुपाद अमेरिका लौटने के 6 महीने बाद 1968 के ग्रीष्म के प्रारंभ में मॉन्ट्रियल पहुंचे। भारत में 1967 के जुलाई से दिसंबर तक के काल में उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया था और 14 दिसंबर को वे सैन फ्रांसिस्को वापस पहुंच गए थे। After a few weeks, he had gone to Los Angeles, where a small group of disciples had opened a storefront temple in a middle-class black and Hispanic neighborhood. The storefront was bare, and the location is secluded. Prabhupada had stayed there 2 months
delivering lectures, holding and giving strength and inspiration to his disciples. Although a boozing in his head had made walking difficult, he had found a warm climate and sunshine agreeable and had continued to translate Srimad Bhagavatam, dictating tapes and sending them to Boston for typing. तो सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के बाद कुछ सप्ताह बाद वे लॉस एंजलिस गए थे, जहां उनके शिष्यों ने मध्य वर्गीय काले लोगों और हिस्पैनिक बस्ती के बीच एक स्टोर फ्रंट में एक मंदिर स्थापित किया था। स्टोर फ्रंट साज सज्जा विहीन था और स्थान एकांत था। प्रभुपाद वहां 2 महीने रुके थे। वे व्याख्यान देते थे, कीर्तन कराते थे और अपने शिष्यों को प्रेरणा और बल प्रदान करते थे। यद्यपि सिर में किसी भनभनाहट के कारण उनके लिए कार्य करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने गर्म जलवायु और धूप को अपने अनुकूल पाया था और श्रीमद् भागवत का अनुवाद जारी रखा था। वे बोलकर टेप पर रिकॉर्ड कराते थे और टेपों को टाइप के बाद बॉस्टन भेजते थे। It's interesting how busy Prabhupada was, how hardworking he was, how intense his travel schedule was. But you think he was healthy? No. So sometimes we come to devotional service and we think that devotional service means perfect health. No headache, no fever. तो बहुत रोचक है। श्रीला प्रभुपाद इतने व्यस्त थे और इतना अधिक भ्रमण करते थे सेवाओं के लिए। और आपको क्या लगता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा था? तो कई बार हम भक्ति में आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब भक्ति में आए हैं तो कोई हमारा स्वास्थ्य सब कुछ बिल्कुल सही होगा, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा, कुछ सिर दर्द नहीं होगा, कुछ बुखार नहीं होगा। So this is very important for us to understand that our founder Acharya, he was having serious health problems, but those health hazards did not deter him from furthering the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो ये हम सबके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है कि हमारे संस्थापकाचार्य हैं, उनको बहुत ही अधिक शारीरिक समस्याएं थी, परंतु ये जो शारीरिक समस्याएं हैं ये किसी भी रूप से बाधा नहीं बनी उनकी जो अपनी सेवा थी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का और आदेशों का पालन करने में। And for a scholar, what he uses, his weapon, is his head. And now the weapon is having so much of trouble. Boozing in the head, that's not a joke. तो एक लेखक हो या स्कॉलर हो या पंडित हो, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है शरीर का? उनका दिमाग, क्योंकि वहीं से काम करते हैं। और यहाँ पर उनके सिर में ही झंझनाहट हो रही थी, तो बहुत आसान नहीं था। So although the boozing in the head is a challenge to his literary works, and even generally speaking, ISKCON administrative affairs, but this did not deter him from doing his work. तो सिर में झंझनाहट के कारण बहुत ही कठिन था उनके लिए, परंतु किसी भी रूप से ये बाधा नहीं बनी झंझनाहट उनके अपने लेखन और दूसरे कार्यों में, दूसरी सेवाओं में। To me this is very inspirational. Very inspirational. तो हमें बहुत प्रेरणादायक लग रहा है। Because the general tendency is that, I'm a devotee, so nothing should disturb me, No headache, nothing. Acha?
क्योंकि साधारणतः हम सोचते हैं कि मैं भक्त हूँ तो कोई भी चीज़ मुझे परेशान नहीं करेगी, कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी, ऐसी सोच होती है हमारी. So our challenges, whether it is health, we should understand to be a source of like a distraction to test our faith, and we should not give in to those distractions. We should deal with it to the best of our ability, but those challenges should not take our energies, our focus away from serving Krishna. तो शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ हो सकते हैं, परंतु शारीरिक अस्वस्थताएं जो हैं ये किसी भी रूप से बाधा ना बने हमारी भगवान कृष्ण के प्रति जो सेवा है उससे. तो हमें हाँ ठीक है, स्वास्थ्य है, उसके लिए जो करना है वो करना है, जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो करें, परंतु किसी भी रूप से बाधा नहीं बनना चाहिए भगवान की सेवा में. And this type of mindset, this value, we see it so much in Prabhupada's disciples. और हम श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों में यही मूड काफ़ी हद तक देखते हैं. And the typical case is, His Holiness Bhakti Swami Maharaja. He is such in a very challenging health situation, but he's been actively preaching, accepting even more disciples. So, health hazards could distract the ordinary being from their services. But for the pure devotee, nothing renders him unserviceable. Rather, everything he may encounter becomes a source of motivation to work even harder to prepare for the ultimate goal. तो एक सशक्त उदाहरण है हमारे बीच में परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज जी. हम सब जानते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ही गंभीर अवस्था में है, उनकी शारीरिक रूप से देखा जाए, परंतु फिर भी किसी भी रूप से उनका शरीर की अस्वस्थता उनके लिए बिल्कुल भी बाधा नहीं बनी अपनी प्रचार की सेवाओं में. तो ये बहुत शिक्षाप्रद है हम सबके लिए. So I remember when we joined, also, I said that, this type Prabhupada's mindset of not allowing ill health to be an obstacle or distract him from his service. This mindset is highly imbibed by his disciples. I remember when we joined, and so I was serving with my Guru Maharaj in West Africa. And so we find that if even he has some serious health issues, he just makes sure that he drags himself to the programs. And I remember one day, just after Mangarati, we used to do some readings like we do here. So he looked around and asked of one devotee, one Sankirtan devotee. His name is Srimad Bhagavatam. He said, "Where is Srimad Bhagavatam?" And then the devotee said, "Oh, he's sick." He said, "Go and bring him here. It's better to die before the date is." तो हमारे बता रहे हैं कि ये जो मूड है श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में बिल्कुल ऐसा ही है. शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं करते और शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद भगवान की सेवा में लगे रहते हैं. जब महाराज ने ज्वाइन किया तो महाराज परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी की सेवा करते थे और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में सेवा करते थे. और हालांकि महाराज का परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं भी होता था, परंतु महाराज ये पक्का करते थे कि जो भी प्रोग्राम है, प्रीचिंग प्रोग्राम, वहाँ पर अवश्य जाते थे. तो एक बार मॉर्निंग प्रोग्राम था और क्लास थी, तो एक भक्त थे, उनका नाम था श्रीमद् भागवतम. तो वो वहाँ पर थे नहीं, तो महाराज ने पूछा कि कहाँ पर है श्रीमद् भागवतम. तो किसी ने बताया कि वो बीमार हैं. तो महाराज ने कहा उनको लेकर आओ. अच्छा है कि यहाँ पर बीमार भी हैं, तो अच्छा है कि यहाँ पर विग्रह के सामने शरीर छोड़ें.
And I remember also in my own case, what he did to me. I had a terrible accident, ghastly accident, that I was unconscious, but somehow or the other, Krishna thought, I have some more karma, and then he pushed me back into this body, so I got resuscitated. And then I ended up in hospital with bladder rupture, broken bladder, pelvic bone cracked. Terrible accident. So I was in hospital. I underwent major surgeries. And then I was staying in university teaching hospital, lying down like this for 2 months, no food. And when eventually I was discharged back to the temple, I was having tubes because I underwent surgery for the bladder repairs. So I was still having suprapubic tube on me. So at that time, I was staying with my Guru Maharaj on the same floor because I was his personal assistant then. So I just got discharged from hospital after a terrible accident. He was in the sitting room. My room is adjacent to his own room, so I had to walk. If I'm going to the temple, I had to come down because it's second floor building. I had to come down to the sitting room. So he was in the sitting room that day. So as I was walking past, he said, "Vasudeva, what service did you do today?" He said, "Vasudeva, what service did you do today?" I came from hospital, just discharged. I was carrying suprapubic tubes. You know what? That's how he trained us. So even when I was in the hospital, I was writing. I had some publications when I was even in the hospital. So I got used to that it's better to die in service than... So when he asked me, at that day actually I was writing. So I told him, "Maharaj, I have been writing." He said, "Oh, very good." So the idea is that we are sick. Sometimes the sickness can become intense. But these bodies is a bunch of trouble. And therefore we see that proper disciples, they imbibe that culture of always being focused on service. And Prabhupada, he was always focused on service. He never allowed his health challenges to come the way of his service. Well, we can't imitate the Acharya, but we can follow their footsteps. Instead of succumbing to every little thing that disturbs us, we can focus on the goal, because we don't know when the final hour will be called. तो महाराज बता रहे हैं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से भी परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी ने एक बार बताता हूँ क्या मेरे साथ किया। तो एक बार मैं उनका निजी सेवक हुआ करता था और एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ और बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ और मैं अस्पताल में था। मेरे शरीर के कई हिस्से हैं उनमें बहुत चोटें आई थी और बहुत गंभीर अवस्था थी। मैं बेहोश भी था काफ़ी समय तक, परंतु फिर भगवान ने मेरी रक्षा की, मुझे आगे जीवन दिया। तो मैं 2 महीने तक अस्पताल में रहा और 2 महीने के बाद अस्पताल में बस केवल लेटा रहता था अस्पताल में। और 2 महीने के बाद अस्पताल से छुट्टी हुई और जब मंदिर पहुंच गया तो मेरे शरीर में कई जगह पे ट्यूबें लगी हुई थी क्योंकि बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। और मैं मंदिर में सेकेंड फ्लोर पर रहा करता था जहां महाराज भी रहते थे, मतलब गुरुदेव भी रहते थे। तो जब मैं अस्पताल से आया और मंदिर में जा रहा था तो महाराज के कमरे के आगे से होकर जा रहा था। तो सोचिए अभी अस्पताल से जस्ट आया हूँ और ट्यूबें लगी हैं और जैसे ही परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने मुझे देखा तो बोले, वासुदेव तुमने आज क्या सेवा की। तो सोचिए अभी मैं अस्पताल से आया हूँ, ट्यूबें लगी हुई हैं और महाराज पूछ रहे हैं क्या सेवा की। पर जो भी है, क्योंकि महाराज ने इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया था तो उस समय कुछ लिखा करता था, तो मैं अस्पताल में रहते रहते भी कुछ लिख रहा था।
तो फिर मैंने महाराज को बताया कि महाराज मैंने लिखा है, लेख लिखा है, ऐसे कुछ बताया। तो महाराज ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह महाराज ने प्रशिक्षण दिया और हम यही देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनमें यही मूड है कि शारीरिक जो मर्जी अस्वस्थता हो, अव्यवस्था हो, परंतु फिर भी अपनी सेवा में और जो जीवन का लक्ष्य है उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि जो शरीर है वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या देगा ही देगा और हमें पता नहीं कि कब हमारा अंत समय आएगा। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो इसकी परवाह नहीं करते और सेवा में लगे रहते हैं। A reporter from Life, that's a publication, a magazine. The reporter from Life had come to Srila Prabhupada's apartment and interviewed him for an upcoming live features titled The Year of the Guru. When the story had appeared, it had mixed Srila Prabhupada and his movement with coverage of other gurus, although the article had carried a large color photo of Srila Prabhupada and favorably described a reporter's visit to the New York ISKCON Center. Srila Prabhupada had said that being grouped with gurus who taught concoctions of yoga and meditation was not good. तो लाइफ का एक संवाददाता प्रभुपाद के कमरे में आया था और पत्रिका में आने वाले एक स्तंभ के लिए उनका साक्षात्कार लिया था। स्तंभ का शीर्षक था द ईयर ऑफ द गुरु, यानी गुरु का वर्ष। जब साक्षात्कार प्रकाशित हुआ तो उसमें प्रभुपाद और उनके आंदोलन के साथ अनेक गुरुओं का घोल मेल कर दिया गया था। यद्यपि लेख के साथ प्रभुपाद का एक बड़ा रंगीन चित्र दिया गया था और एक संवाददाता की उनके न्यूयॉर्क इस्कॉन केंद्र में भेंट के बारे में अनुकूल टिप्पणी की गई थी, परंतु प्रभुपाद ने कहा था कि ऐसे गुरुओं के साथ रखा जाना उन्हें पसंद नहीं था जो योग और चिंतन के मन घड़त छलावे सिखाते थे। In May, a few months after leaving Los Angeles, Prabhupada had paid a first visit to his ISKCON Center in Boston. There also, he had found a few disciples based in a small storefront. He had lectured at many of the local universities, including Harvard and MIT. At MIT, and that is Massachusetts Institute of Technology. It's one of those high-powered institutions in the East Coast of America. At MIT, addressing a gathering of students and faculty, he had challenged, quote, where in this university is there a department to teach scientifically the difference between a living body and a dead body, unquote. The most fundamental science, the science of the living soul, was not being taught. लॉस एंजलिस छोड़ने के कुछ महीने बाद मई में प्रभुपाद बोस्टन के अपने इस्कॉन केंद्र में पहली बार आए। वहाँ भी उन्होंने कुछ शिष्यों को एक छोटे से स्टोर फ्रंट में काम करते पाया। उन्होंने बहुत से स्थानीय विश्वविद्यालयों में भाषण दिए थे, जिनमें हार्वर्ड और MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सम्मिलित हैं। MIT में विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के एक प्रभाग के समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनौती दी थी, इस विश्वविद्यालय में वह विभाग कहाँ है जो वैज्ञानिक ढंग से एक जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर बताता है। सर्वाधिक मूलभूत विज्ञान पढ़ाया नहीं जा रहा था जो जीवित आत्मा का विज्ञान था। So, Prabhupada was very active in preaching, and media preaching also was very much part of his lifestyle, like appearing on television, granting interviews to journalists, because the media, the social media, print media, television, radios, they are considered, especially televisions and radios and the print media, they are considered like the ordinary person, the ordinary man or woman considers these platforms
to be like authority. They tend to accept whatever is been said whatever that appeared on the TV. Yeah, the people tend to embrace it, whether it's good or bad. And also in the newspapers and magazines. So Prabhupada will give audience to journalists, and especially he cherished when the interview is featured or is printed, so that people will have a chance to be able to read and have some glimpse into the Krishna consciousness philosophy. So in Massachusetts, he had in Boston, he had these lectures in different universities, including MIT. I remember when I went to one country in Africa, that is in South Africa. And when I went to one university, the devotees had arranged for me to give a talk at one university. And when we finished the talk, one devotee came to me and said, in this hall, Prabhupada himself gave a lecture in this hall. So Prabhupada will personally go to universities and preach. Why? Because, these big-time professors, they control the world. The governors, the presidents of the country, they are consultants. The professors, they are consultants to all these top shows. So Prabhupada targeted these high-profile personalities, speaking to them, giving them one-to-one interviews, discussions, and talks. And in this way, he made so many of these high-profile personalities to resonate with the philosophy of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद हर समय प्रचार में लगे रहते थे और हर सुविधा को प्रयोग करते थे भगवान के प्रचार में. और प्रभुपाद ने मीडिया प्रीचिंग भी काफ़ी किया. तो मीडिया में प्रिंट मीडिया हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, तो उस समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे ये सब. तो और लोग इतने प्रभावशाली थे कि जो भी टीवी में आएगा, उदाहरण के लिए लोग सोचते थे बस यही सच है, यही बिल्कुल सही है. तो प्रभुपाद जी काफ़ी समय देते थे और जो भी मीडिया या रिपोर्टर उनके पास आते थे, प्रभुपाद जी उनको समय देते थे, उनकी बात सुनते थे और फिर उनको प्रचार करते थे. और क्योंकि उनके द्वारा साधारण जन समूह तक संदेश पहुंच सकता था. और साथ के साथ प्रभुपाद जी यूनिवर्सिटी टीचिंग में भी बहुत एक्सपर्ट थे. यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जहाँ भी अवसर मिलता था प्रभुपाद जी जाते थे, जैसे MIT में भी गए. और महाराज बता रहे हैं कि मुझे याद है एक बार मैं भी गया यूनिवर्सिटी में, एक अफ्रीका में, और वहाँ पर मैंने हॉल में लेक्चर दिया. और जब लेक्चर समाप्त हुआ तो वहाँ पर एक व्यक्ति बाद में आया और बोला कि एक भक्त आए, उन्होंने बोला कि इसी हॉल में पहले प्रभुपाद जी भी आए थे, प्रभुपाद ने इसी हॉल में लेक्चर दिया था जिसमें आप दे रहे हैं. तो इस तरह हम देखते हैं प्रभुपाद कई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाकर भी लेक्चर दिया करते थे. क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो खासतौर पर शिक्षक लोग हैं उनको प्रचार करेंगे तो उनके माध्यम से जो साधारण जन समूह है या जो विद्यार्थी हैं या जो बुद्धिजीवी हैं उन तक भी प्रचार पहुंच सकता है, भगवान का संदेश पहुंच सकता है. After Boston, Srila Prabhupada had come to Montreal, and after 3 months in Montreal, Prabhupada flew to Seattle. Seattle is in America, in the West Coast, where he stayed for 1 month. It's a big ISKCON community in Seattle now. Big temple, Vedic temple, and really big devotee community there. Seattle is also the hub of IT in America. He flew to Seattle, where he stayed for 1 month. Then he briefly visited Santa Fe, New Mexico, where the ISKCON Center was tiny, isolated, and storefront. Prabhupada's reasons for traveling from center to center were to train and convince each disciple and to speak with newcomers. Many young people came to hear
but Prabhupada found the majority already ruined by illicit sex and drugs. They were rich men's sons, but they had become hippies, wandering the streets. By Krishna's grace, now some of them were being saved. बॉस्टन के बाद श्रीला प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आए थे और मॉन्ट्रियल में 3 महीने बिताने के बाद प्रभुपाद सियाटल यानी अमेरिका में आ गए थे, पश्चिमी तट पर, जहाँ वे 1 माह तक रहे थे। सियाटल में अभी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा मंदिर है ISKCON का, और सियाटल IT हब भी है संसार का। तो प्रभुपाद जी सियाटल आए थे और वहाँ 1 महीने रुके थे। तब वे थोड़ी देर के लिए सांता फे, न्यू मैक्सिको गए थे, जहाँ ISKCON केंद्र एक छोटे से वीरान स्टोर फ्रंट में स्थित था। एक से दूसरे केंद्र की यात्रा करने में प्रभुपाद का उद्देश्य अपने हर शिष्य को प्रशिक्षण देकर उसमें विश्वास पैदा करना और नवागंतुकों को संबोधित करना था। उनका भाषण सुनने के लिए बहुत से युवा लोग आते थे, लेकिन उन्होंने उनमें से अधिकतर को अवैध यौनाचार और नशीली दवाओं के सेवन से बर्बाद हुए पाया। वे अमीरी लोगों के लड़के थे, लेकिन वे हिप्पी बन गए थे जो सड़कों में भटक रहे थे। कृष्ण की कृपा से अब उनमें से कुछ को त्राण मिल रहा था। Even while recuperating in India, Prabhupada had always thought of returning to America to continue his movement. The Indians had seemed interested only in sense gratification, like that of the Americans. But many American youths, disillusioned with their father's wealth, were not going to the skyscrapers or to their father's businesses. As Prabhupada has seen from his stay in New York City and San Francisco, thousands of youths were seeking an alternative to materialism. Frustrated, they were ripe with spiritual knowledge. भारत में स्वास्थ्य लाभ करते हुए भी प्रभुपाद अमेरिका लौटकर अपना आंदोलन जारी रखने की बात हमेशा सोचा करते थे। भारतीय तो अमेरिकनों की भांति इंद्रियों की तृप्ति में ही रुचि रखते प्रतीत होते थे, किंतु बहुत से अमेरिकी युवकों का अपने माँ बाप की संपत्ति के प्रति मोह भंग हो चुका था और वे उनके गगनचुंबी भवनों में रहने और उनका व्यवसाय चलाने नहीं जा रहे थे। जैसा कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी या सैन फ्रांसिस्को में रहकर देख चुके थे, हजारों युवक भौतिक सुखों के विकल्प की खोज में थे। निराश होकर वे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व हो गए थे। The devotees, still neophytes, knew nothing of spiritual life, and in most cases were very little of material life. In most cases, very little of material life. But because they were sincere, taken to Krishna consciousness, Prabhupada was confident that their shortcomings will not prevent their spiritual progress. Although naturally beautiful, these Western youths were now dirty and morose. Their beauty had become covered. But the chanting of Hare Krishna was reviving them. Prabhupada said, just as the monsoon revives the land of Vrindavan, making it fresh and verdant, and as the Vrindavan peacocks sometimes dance jubilantly, so the devotees, having shared their material bonds, were now ecstatically dancing and chanting the holy names. When a reporter asked Prabhupada if his disciples were hippies, Prabhupada replied, no, we are not hippies, we are happies. जो भक्त अभी नए थे वे आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अधिकतर तो भौतिक जीवन के बारे में भी बहुत कम जानते थे, किंतु चूंकि वे निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत को अपना रहे थे, इसलिए प्रभुपाद को विश्वास था कि उनकी कमियां उनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं बनेगी। यद्यपि ये पाश्चात्य युवक देखने में सुंदर थे और वे अब गंदे और उदास लगते थे, उनकी सुंदरता आच्छादित हो गई थी, किंतु
हरे कृष्ण का कीर्तन उन्हें पुनर्जीवित कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, जैसे वर्षा ऋतु वृंदावन की भूमि को प्रफुल्लित और हरी भरी बनाकर पुनर्जीवित करती है, और जैसे वृंदावन के मयूर प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करते हैं, उसी तरह भक्त भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग कर अब हर्षोल्लास से नित्य और भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। जब एक पत्र संवाददाता ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या उनके शिष्य हिप्पी थे, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हम हिप्पी नहीं हैं, हम हैप्पी हैं। So, again, you find now in America, a number of the people, early devotees who came to Prabhupada, they came from well-to-do families, but a number of them resorted to take to the search for alternative lifestyle because they were not satisfied with the materialism that was prevalent in the families and in society. And so some of them even take to the streets. And that's when we have the hippie movement, where people resort to take to the streets, live a cockade-free life of taking drugs, intoxications, and sex mongering. But when Prabhupada came to America and some of these hippies were lucky enough to encounter Prabhupada, their whole life was transformed. Some of them even went as far as becoming Goswamis. A number of the Goswamis we have in our movement, they come from this background. So Krishna consciousness is very much a powerful tool for personal transformation and for societal transformation, because we see how the movement had changed so many people who were like, at the brink of disaster. They became saints. Imagine when you are grossly involved in sinful activities, and from there you become a saint. What more can be said of that transformation, that transformative process? That is what we are treading on. So if some people have become saints coming from a real terrible background, anyone could become a saint if the person follows what Prabhupada has left behind, the legacy of Srila Prabhupada. Is something that we have seen. It's called lived experience. People are still there on the planet who encounter Prabhupada, who came from hippie backgrounds, and they're Goswamis in our movement. So the Krishna consciousness process is very transformative. Anyone who takes to this process seriously will have his or her life transformed. Evidence is there, documented. तो हम देखते हैं कि ये उस समय अमेरिका में बहुत धनी परिवारों के युवक बच्चे थे, पढ़े लिखे थे, नौजवान थे, परंतु फिर भी गुमराह हो गए थे पूर्ण रूपेण और ड्रग्स इत्यादि ले रहे थे, सड़कों पे आ गए थे, माता पिता के बड़े बड़े घर या घराने छोड़ के सड़कों पे आ गए थे और खोज रहे थे कोई बड़ी चीज़, विशेष चीज़, आनंद या आध्यात्मिकता। और उनको प्रभुपाद जी की कृपा मिली और श्रील प्रभुपाद की कृपा से ऐसे ऐसे लोग जो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लिप्त थे, बहुत ही निंदनीय तरह के कार्य करते थे, हर तरीके से इंद्रियों को संतुष्ट करने में भौतिकवाद में लगे हुए थे, वो भी इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शरण लेकर या कृष्ण भावना की जो प्रणाली है उसकी शरण लेकर संत बन गए, गोस्वामी बन गए।
हम देखते हैं कि हमारे ही आंदोलन में कई ऐसे भक्त हैं जो पहले इस बैकग्राउंड से आए थे, हिप्पी थे, यानी पूर्ण रूपेण इंद्रिय में लिप्त थे, परंतु क्या अद्भुत बदलाव है इस कृष्ण भावना आंदोलन के माध्यम से कि वो संत बन गए, गोस्वामी बन गए। तो ये एक एविडेंस हम सब के लिए है। जब इंद्रिय में पूर्ण रूपेण लिप्त व्यक्ति भी गोस्वामी बन सकता है, संत बन सकता है, तो इसका मतलब हम सब भी प्रयास करें तो हम सब भी संत बन सकते हैं। तो ये इसका जो प्रमाण है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह प्रभुपाद ने इन सब हिप्पियों को बदल दिया और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही सशक्त बना दिया। So the process of Krishna consciousness demonstrably has served as an antidote for illicit drug consumption, because people were taking all this cocaine, these hard drugs, they took to the chanting process, and they leave all those things behind. I remember recently in Kolkata, we had a program. One devotee was preaching to high-profile professionals, some doctors and professors. So he invited me to come to their program to give a talk. So one of these, one family, the man is an engineer, the wife is a housewife, the daughter is doing a young lady, she's doing a PhD in quantum physics. So parents are chanting. In fact, the mother is wanting to take initiation, the father too. So then after the presentation, after the talk, during question and answers, the devotees already told me that the girl, she's not chanting. But I deliberately asked her, that, so your parents, you like what your parents are doing? She said, yes. I said, what about you? What do you think of? What's your consideration about following the footsteps of your parents? So she asked me a question. And what is the question she asked? The scientists, they want practical thing, that they want to do something, they want to see what is the practical effect. She asked me a question that, what is there in the chanting? What is there in the chanting? So I just gave this explanation about how the chanting has changed drug addicts to sadhus, to paramahamsas. And then she said, she would deliberate on this and try to take to the chanting like her parents. So people want to see practical thing. They may not be interested in going back to Godhead, but the material world is full of problems. People have money, and sometimes the people who have money, they are involved in, they are drug addicts. They are not happy with their lives. And that is why you find in some cases, they commit suicide. So the process of Krishna consciousness has saved so many lives in the West. People who are drug addicts. And therefore, if we are grateful to Prabhupada, what he has done, we have to help in spreading these teachings to all and sundry. And that is why Prabhupada himself said, the books are the basis. Preaching is the essence. तो हम देखते हैं कि जिस तरह आधुनिक युग में भी ड्रग्स इत्यादि नशावाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और जो आध्यात्मिकता है, कृष्ण भावना का अनुशीलन करना, ये एक तरीके से विकल्प है इन सब भयंकर नशों के लिए। तो ये आध्यात्मिकता को जागृत करता है और नशे वगैरह से बिल्कुल दूर लेकर जाता है। तो हम देखते हैं संसार में लोग बहुत कुंठित हैं, और इसीलिए
ड्रग्स इत्यादि लेते हैं, हालांकि आत्महत्या भी कर लेते हैं, पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शरण लेने से, हरे कृष्ण नाम का जप करने से इतना अद्भुत बदलाव आता है कि उनको हृदय में संतुष्टि मिलती है। और जब हम प्रचार करने निकलते हैं तो प्रचार में लोग हो सकता है इसमें अधिक रुचि ना रखें कि भगवत धाम जाना है, परंतु उनको कुछ व्यावहारिक चाहिए। अभी हरे कृष्ण नाम करने से क्या होगा हमारे जीवन में, वो जानना चाहते हैं। तो एक बार कलकत्ता में महाराज बता रहे हैं कि मुझे किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। एक भक्त हैं, प्रचार करते हैं, पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर्स इत्यादि को प्रचार करते हैं। तो मुझे वहाँ निमंत्रण दिया प्रवचन के लिए। और वो जो भक्त हैं, वो उनकी जो एक पुत्री है वो युवती है, और वो क्वांटम फिज़िक्स में उसने कुछ किया, मतलब वो एक्सपर्ट है उसमें, क्वांटम फिज़िक्स में पढ़ी हुई है। और वो चैंटिंग नहीं करती थी, पहले से महाराज को पता था, इसके बताया गया था। तो महाराज ने प्रवचन दिया, और प्रवचन करने के बाद उससे पूछा युवती से कि तुम्हारे माता पिता जो करते हैं तुम्हें अच्छा लगता है, कैसा लगता है? वो कहती है हाँ अच्छा लगता है। तो महाराज ने बोला कि आपके लिए क्या है, आप भी करोगी? आप करती हो हरे कृष्ण नाम? कहती है मैं क्यों करूँ हरे कृष्ण नाम, क्या होगा उससे? तो फिर महाराज ने यही बताया कि किस तरह जो हिप्पी लोग थे, नशेड़ी लोग थे, पूर्ण रूप इंद्र तृप्ति में लगे थे, वो इस हरे कृष्ण नाम का जप करने से बड़े बड़े संत बन गए, साधु बन गए। और जब उसने सुना तो उसने कहा हाँ ये तो बहुत अद्भुत बात आपने बताई, और मैं इस पर अवश्य मनन करूँगी और मैं प्रयास करूँगी जप करने का। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रचार में लोग व्यावहारिक क्या लाभ मिलने वाला है उसमें अधिक रुचि रखते हैं, तो वो हमें उनको बता सकते हैं। Prabhupada did so much, and he also was involved in preaching activities that we cannot even dream of attempting. For instance, Prabhupada went even to nudist homes, nudist settings in America. Not all in America. In most of these developed countries, there are nudist communities. You know what is nudist community? Huh? Communities where everybody, they don't wear clothes, they don't wear pants, everybody is naked. Prabhupada went there to preach and made devotees. तो प्रभुपाद ने जो प्रचार किया वो तो अद्वितीय है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। हम ना कल्पना कर सकते हैं, ना सोच भी सकते हैं कि हम वैसा कुछ कर पाएंगे या नकल कर पाएंगे। प्रभुपाद तो कहाँ कहाँ प्रचार के लिए नहीं गए। तो कुछ ऐसे समुदाय हैं विश्व भर में जो कि नग्न रहते हैं, पूरा का पूरा समुदाय है, और उस समुदाय के जो लोग हैं वो कपड़े नहीं पहनते, बिल्कुल नग्न रहते हैं आपस में। प्रभुपाद उनके बीच में भी गए प्रचार के लिए, और वहाँ पर भी उन्होंने भक्त बनाए। So when you leave the city and go to stay in those nudist communities, you are literally creating your future life, animal life. Animals don't need clothes. And if a human being doesn't need clothes, the next life should be animal life. But Prabhupada went there to save souls. तो जो लोग इस नग्न समुदाय में रहते हैं, सभ्य समुदाय से वहाँ पर जाते हैं, तो अपना अगला जीवन तैयार कर रहे हैं, पशु बनने वाले हैं, क्योंकि पशु नहीं कपड़े पहनते, तो अगला जीवन पशु बनने वाले हैं। पर प्रभुपाद जी उनके बीच में भी गए, उनको बचाने के लिए, और उनको भक्त बनाया। But we are not Prabhupada. पर हम सब लोग प्रभुपाद नहीं है। Srila Prabhupada ki जय। भक्ति वासुदेव स्वामी महाराज जी की जय। Don't go to nudist communities to preach. तो इसलिए नग्न समुदाय में ना जाए प्रचार करने के लिए। Except you're looking for trouble. जय। हिज भक्ति वासुदेव स्वामी महाराज जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And we're extremely fortunate, Maharaj, that we have such wonderful association. And on one side, we do have devotees who came from that background. On the other side, we have such exalted, scholarly personalities like your Holiness. Thank you very much, Maharaj.
uh, with the understanding that what I'm saying is going to be for the benefit of the person I'm talking to. And unity, that is the foundation of unity. If you say something to somebody, you don't hurt them. I see that a lot with your devotees here. They're very community oriented. So, and they're friendly. See, this is the only place where I have come. And, you know, I got so many people asking me, please come to my home. Please come to my home. Please. Yeah. I go to many places in India, okay? But this is the only place which is very exceptional. See, for someone to ask you, to request you to come to their home, you know what that means? Because it's just like when you make a friend, first you give them your office number. You don't give them your cell phone number or home number. It's official. It is when the relationship becomes close that later you give them your cell number or your home number. So that is another step of the relationship. And I see that type of friendly attitude here. That's one of the motivations of my coming. That's your purities attracting them Maharaj to invite you. तो महाराज बता रहे हैं कि कम्युनिटी का मतलब ये है कि कम्यून का मतलब है कि आपस में वार्तालाप करना और इस भाव से कि दूसरे का उसमें हित हो, और यूनिटी का मतलब इस भाव से कि जो भी हम बोल रहे हैं उससे किसी भी रूप से किसी को बुरा नहीं लगे. तो ये कम्युनिटी का बहुत अच्छा महाराज ने अर्थ बताया. और महाराज बोल रहे हैं कि यहाँ पर है, मतलब महाराज चाहते हैं कि यहाँ पर हम सब उसको विकसित करें. और महाराज ने बोला कि मैं कई जगह जाता हूँ भारत में, पर ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, मुझे निमंत्रण देते हैं कि घर में आओ, मतलब बहुत फ्रेंडली हैं. तो ऑब्वियसली महाराज की प्योरिटी है. तो महाराज का धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj Ji ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samvid Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. हरे कृष्ण. और कल मॉर्निंग प्रवचन भी महाराज के द्वारा रहेगा. हरे कृष्णा.
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे। बोलो बोलो
Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 बोलिए बोलिए कृष्णा हे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Hare